Now we have the third panel for the day, Models and Approaches for Institutionalizing Capacity Development through Projects at the State Level. This panel will be moderated by Lead Urban Practitioners Program, Anuttama Dasgupta. I welcome the panelists for this panel, Dr. Rahul Karnamadakala Sharma and Anand Lakhan. Dr. Rahul Sharma is a fellow at the State Capacity Initiative at the Center for Policy Research. His work over the past 12 years has focused on human resources, administrative reform, capacity building, monitoring and evaluation, and data analysis. His sectoral interests are in waste management, distributed energy systems, and sustainable cities. He holds a master's in public policy from Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota, and a PhD in public management and quantitative methods from the University of California as a Regents Scholar. Anand Lakhan is an independent consultant working on housing rights issues with urban vulnerable communities for 25 years. He is also the convener of the state-level Slum Federation, Madhya Pradesh Nav Nirman Manch. Anand has worked as an assistant professor in the Master of Social Work Department of Indore Christian College and School of Social Science Department of Devi Ahilya Vidya Vishwalaya. And currently, Anand is engaged with IIHS as an external consultant along with People Science Institute Dehradun, Indo-Global Social Service Society, etc. Over to you, Anuttama. So welcome back after a great discussion in the first half, where we heard from the private sector as well as the high-level, national-level functionaries. It is my pleasure to have with me the two other ends of the spectrum. So I have with me a scholar of capacity development, and I also have an rights activist. So why I frame this panel in this way, because as I understand and as a lot of people have spoken in the first half, the purpose of building capacity, one of the purposes is to is service delivery. And service delivery goes hand in hand with redistribution of the nation's resources. So coming from that point of view, how is training helping in that final end, and is training enough? And also there is this imagination in the system that if we do individual training, somehow miraculously the system will change, because the system is made of individuals. But as you all know, that is a very reductionist approach, and it's way too simplistic. That's not exactly how things happen. Which raises the question of systems change and institutional and organizational development, which is something the previous panels also focused on. So with that, keeping that background in mind, first I would call upon Rahul to share his thoughts from the extensive research work that he's been doing in the area of state capacities. Thanks so much. Is this working? Yeah. Okay. I have a small slide deck. You can just. Okay. Yeah, that's better. So I have a small slide deck which I'll just kind of walk through. Just a sort of caveat, while I do research and unfortunately spent many years getting a PhD, much of what I'm actually going to be drawing on is practice. So with the State Capacity Initiative for the last 5 years, I've spent a lot of time teaching and training and designing courses on
what we like to call values and skills, which sort of is in the behavioral competencies realm of things for administrative training institutions, which are the sort of epical training institutions in the states. They don't get a lot of attention. Much of the attention is taken by the training institutions for the All India services, but below that, there's a wide range and many training institutions that I am very particularly interested in. The other place that I'm drawing on is my recent work with the Tamil Nadu government on actually thinking through human resource reform. And one of the components of human resource reform is capacity building. So I will just sort of walk through a little bit. It's a few thoughts that I put together this morning. So sorry they're a bit garbled, but I don't think they should be. But in a way, what I want to do is give a little bit of a sense of where we are in the state, because the key word that I took away from the title of this presentation, this panel, is institutionalization. So I think it's important to understand where the institutions are, number one. Number two, my general argument is going to be that I think we've jumped the gun a bit. I think capacity building, when training became training into itself, capacity building, unfortunately, is also going to become just capacity building unto itself. And I'm going to just generally argue for actually an approach that looks at human resources reform in very specific ways, saying that I think we need to start with HR planning, starting with an appreciation for who you need, how many you need, and then you can figure out the other pieces, they fall into place. It'll become clearer once I kind of jump into this a little bit. Okay, so this we heard in the morning. So there will be a lot of repeats because I think the jargon now and the quotations in this ecosystem are quite widely used by everyone. So it is a punishment posting, right? Most people will tell you that. Even some of the people at Labasna will tell you that. The people who often that have not, so of course the army is an exception. The other exception is the police. After having interacted with enough sort of state police training institutions, you don't hear this that often, but for everyone else, this is the case. Okay, I want to start with the idea that actually the reason we don't get anywhere is because levels of motivation are very, very low, right? Both among trainers and trainees, right? This is the symptom. It's not the cause, right? The cause is a bunch of different things that I'll just walk through over 2 slides. It's not a very long presentation. Okay, is this a new problem? No. Okay, so this is where the researchy side of my life comes in. We have been looking at the debates in our administrative reforms commissions since the first ARC, right? So 69 onwards, and in fact, even before that, when the colonial administrative system was there and the kind of training infrastructure that was being set up, a very large number of government reports and committees have looked at the problem of training. Incentives, motivation, nobody comes, people hate their training, absenteeism, all of this has been sort of persistent problems with training. This report, of course, looks at the higher civil services a bit more because it was, we had to pick something. Although at the state level, there have been a number of committees. So in Tamil Nadu, where I work, very recently they call them one-man committees there. So each state has a number of committees that have looked at it. At the All India level, Kothari, Alag, Surendranath, Yugender, Hota, all these committees have been talking about the same problems. They refer back to the previous committee and they say, look, people are still demotivated. Okay. So anyway, somebody's interested, you can ask me for this report. It kind of lays out a timeline of all the thinking around training and capacity building. Today we've come to Mission Karma Yogi, which has been in place for a few years. And I'll talk about that as well. Okay. So this problem has not changed, right? And where are we today? I think if we, like I was saying, institutionalization, let's understand the institutions first. At the state level, I'm not talking about the national. At the national, I think it just gets lots more attention. So one is that there are many state training institutions. It's not just the Administrative Training Institute, which is usually the apex training institute. It's supposed to have coordination functions. It's unable to usually fulfill those functions. But right now, I think even the major ones, so each department usually has one, then there are some ancillary ones. So you can have 30, 40, 50 training institutions, right? Some of them are doing civil services training, others are doing sectoral training. They do work in silos. They don't talk to each other. There is no real good coordinating mechanism that allows them to do that. So there's a lot of duplication. Importantly, there's actually a disparity in the quality of training that some people get, right? So education that has more money or health that has more money
the workers in those departments end up getting much better quality of training than in other departments. Police gets very good quality training. Okay, the value of training institutions, right? Actually, this is a core fundamental motivational issue. Most of the money, and I can't share the precise budgets with you because that's work that's in progress, but it's less than 1% of the total HR budget of that department. And that's usually on the higher end. Actually, it can be much lower. The training institute doesn't actually get much money. Money for training comes in the form of government programs. So it's usually linked to some sort of existing government program, which is why you see a lot of money in health and education. And in police, where training is sort of taken very seriously, training institutes usually have a much greater chunk of money. So I've seen even 5% as the total payroll budget allocated to the training institution. Another problem that the training institutions have besides budgets is that they actually have very limited budgetary, there's a very little autonomy. Most of them, including some of the ATIs, have to go through sort of whole range of permissions and levels to get access to pens, pencils, or even to put a little fence around their institution. Training institutions are usually under some personnel department, and anyone who's been an educator or worked in education institutions know that these are one of the things that actually pulls back, or these administrative duties actually pull you back. But it is something to think about, right? Many of them are lobbying to become, or not lobbying, you can't lobby, but are at least have talked about wanting to become societies rather than government departments, because societies can do a lot more. You can do teacher exchanges, you can get in grants from different sources, you don't have to be dependent on government money, which is anyway very little, right? So variation in quality is quite high. Trainers have very few professional development activities. If I would never join a state training institution. It would be a huge waste of time for me, because I would join as a lecturer, then after 5 years I can become assistant director, then I'm basically just doing paperwork. So if I want to see myself as a assistant professor, associate professor, professor, if I want to see some career growth, if I want to do research, these opportunities actually do not really exist in most of our training institutions. You're supposed to just deliver content that is either pre-designed by the DOPT or by your training institution. Okay. And the reason this is important is because now, we've jumped to this whole learning management system thing, right, where there's going to be digital resources for training. It is a repository for educational content. But training institutions themselves will continue to be important sites in which a lot of the teaching will have to be done, right? You can, I think we've sort of overemphasized the importance of digital resources and forgotten that actually much of training happens through. Don't stand in the classroom and give lectures, right? Use the resources to have people come in and reflect on what they read. Right, work with them through that, do role play activities, team building activities, whatever. But classrooms and teaching institutions will continue to be important. That part is being missed out in the current conversation. Okay, this is something that's been spoken about earlier, right? And I think, again, going back to what I was talking about, I'm trying to figure out why the motivations are low, right? So from this side, we can see the motivations are low for training institutions and trainers. Motivations are low for trainees, because the training is really not very, just not appropriate for what they end up doing. Either because there's a mismatch between what they are educated in and what they're doing, or between their job descriptions, if those at all exist, as we know they don't, and what they end up doing. But it's pretty outdated. It's not very exciting to go to a training institution. And the last thing is that, even when there is training, the way that our system currently is, it's either delayed or it is sort of treated as a sort of side activity that will be done when we get some time, right? So, mid-career training and induction training are the two big things that bureaucrats get, right? But if you look at sort of the way in which recruitment is done and vacancies are filled, general to government, there's a large number of vacancies, right? And then you kind of hire a lot of people at one time. You immediately need to send them to the field to do some work. So you don't send them for induction training. And some 2 years later, maybe they'll go for induction training, by which time they already know everything because they've learned it on the field. That's one problem. Second problem is in our calculation of how many people we actually need in departments, often there is no training reserve, right? So if I have to go for training, somebody needs to do my job while I'm going. Often this is the excuse why people are not sent for training, because there's nobody else to do the job, right? That's one problem. Second is that
this has come up earlier, so I won't spend too much time on it. It's, not tailored towards long-term self-development, right? In terms of saying, okay, I'm here, this is where I want to be, and this is the competencies framework can handle. So I won't spend more time because I think lots of people have spoken about that. And most importantly, training is not linked to career progression, right? It's a seniority-based system in the government largely. And then there's a roster for reservations, of course. But where's the incentive and where's the motivation for me to get any training if eventually I know that if I sit in this position long enough, I will get promoted? Now, the reason I'm kind of talking about this is to come back to sort of a central point that I was making earlier. See, we can fix some of these problems, right? Small problems. We can do a training needs assessment. These are the kind of things that people talk about a lot, right? We can increase the budgets of a few state training institutions. We can hire a few world-class institutions to offer training programs, etc. I think that's great. But to me, actually, if you're going to look at sort of big ticket reform, it's not going to happen until you start thinking of training as part of wider HR planning. Right? You can only train when you know how many people you need in the first place, right? Who you need, what skills and competencies they have, right? By when, right? And all of these questions, once you answer, right, then you have a sense of what it is. And you draw that from your goal, right? Your goal is not to build capacity. Your goal as a department is to do service delivery, right? You decide what your service delivery goals are. Think about that. Think about who you need, therefore, to deliver those services. Once you think about who you need to deliver those services, you can figure out what competencies they have. Once you figure out what, then you think about training, right? So I just think that it's slightly useful in this moment that we are to just shift the process back a little bit and look at some of the fundamental problems, right? Because the problem of motivation is fundamentally about professional development. Until we figured out professional development pathways, talking about capacity building seems like a little bit of a dead end. Last slide. Okay, so what can we do? My sort of general learning from all these states has been that actually we need to step back. We need to start working on HR planning, workforce planning, cadre reviews, whatever you call it. Cadre reviews are done every 5 years for the All India services. It is generally not a practice that is done at the state level, right? Just to say, how many people do I have? How many people do I need for what? What I think this would be, the best place to do this would be at the departmental level, right? And this is the institutionalization part of the question, right? Where you create committed and empowered teams. HR doesn't actually have much power in government. So create teams like that within governments to be able to do these reviews. I'm not going to get into the details of what kind of committees and all that. We can talk about it. What should HR planning be about? It should be about figuring out strength, posts, competencies, training needs for entry, promotions, and deputations. And very importantly, and something that people find very boring, but is actually the core of much of our problems today, are service rules. Our service rules have not been updated since they were made. Some of them still have sort of requirements for posts that are some degree that doesn't exist, some posts that is not required, right? And that is where the litigation happens. The reason that governments are very scared to make a lot of changes to HR is because people can go back and litigate based on what the rules say. And this is very different from the private and non-profit and educational sectors. That until you start looking at reviewing the service rules, and that should be part of workforce planning, you're not going to get a shift on any of the other measures because you will be in court all the time. I think there is, so my belief, departments know best. I know how to hire a research associate for myself, right? I can define those competencies well enough. So I think there's a decentralized element to this that is important. I think we've been listening to very centralized models of how to do capacity building. I do think there is this value in having some sort of coordinating body, right? That overall governing body, to me, is useful if it can elevate the priority given to training, right? And be able to direct departments to follow certain kinds of things. So what happens right now is personnel department or HR department, usually the junior most secretary is assigned there, right? Or some additional charge, right? It's not a department anyone is listening to. And what I think centralization can help in this part is to actually give some sort of directives. This kind of overarching commission or committee can give some directives. Maybe it's chaired by the CM themselves in the states. So they can tell departments, you need to do these reviews regularly and then plan your training accordingly. So that's the general institutional story. I'll end with one slide, just saying why it's difficult. I've said this in a few places.
all this sounds, we say, oh, maybe in 10 years, maybe in 20 years. It's not going to be very easy because HR decisions, unlike in many of the organizations we work with, where there's actually a HR question being asked, there's usually a finance question that's being asked in government. Right? By zero budget, we mean if somebody wants to have 10 more posts at the bottom, or sorry, at any point in a department, you want 10 more posts, you have to sacrifice an equal number of posts in some other part of the system. That's how HR decisions are taken, unfortunately, right? HR plays a very secondary role to finance, right? So if there's no HR, if it's only finance, we're not going to move very far. One of the reasons that it was possible to actually have some movement in Tamil Nadu is because the same minister was handling both portfolios. Again, I said it's open to scrutiny, right? Lots of people are dependent on this system for employment, and then from the outside, and then there are millions of people within the system also trying to secure their employment. Anytime I talk to any of the PSCs, any of the recruitment bodies, the only thing they say is don't make too many changes because I do not want to deal with more litigation. Right? So government is very slow to move on this for a very real reason. Last thing is, in most organizations you go in, there's some sense like what it looks like. Like there are clear departments where even if it's different departments, say there's an HR department, there's a communications department or a research department, within them people move up. Here in the government, because of the way services are structured, even within departments, there are layers and layers and layers of services or cadres. Each of them have hundreds of rules. Each of them has one service, big rule, or special service rule, things like that. So kind of going through that mess, I think it's very important, and we're just avoiding this problem. I think this problem needs to be addressed. They're outdated. They have silly rules in many cases. Somebody needs to look into this but most people don't want to because it's too boring. So that's my sort of last point, that I would love for this to happen. I'm trying to make it happen myself. But I think the details of where the root of the problem is worth getting into as much as it is to establish new big structures for capacity building. So I'll just stop. Thank you, Rahul, for laying out the internal structure of the institutions, the government institutions for us. Some of it is also something we saw the symptoms, but we really didn't know the inner workings of it. So thank you. I just want to interrogate that a little bit. You said that the main symptom is lack of motivation. But in our experience, we have also experienced this very strong resistance. To me, lack of motivation is, there's a neutral and you don't want to do something. But resistance is something much more deeper, darker, and it's like in the system. So would you say that is it just because of the outdated service rules and there's so many of them and they're just afraid of litigation is why there is this systemic resistance to change, or it is just lack of motivation? So I was talking about lack of motivation for training. Yeah, I'm talking about overall. Even to change the service rules, there has to be some change. Yeah, so because it's very tricky to do this, there are a lot of interests, and because there are so many services, there's that many number of more groups of people trying to protect themselves and their jobs. I think it is very open to scrutiny because it's in the public always. How many people are being hired? How many are from which community? Government is very closely watched on questions of HR. So it is, at both the political and the bureaucratic level, it's very hard to come to terms with change within the system. So service rules is one thing that I think is a written example of where it goes wrong, but if it's not well designed. But I think that in general, there is a resistance to change also, which comes from people just wanting to protect the current system in the way it is right now. Because it is very comfortable for some people. It is. The seniority-based system is very comfortable for some people. You don't have to do that much work. You don't have to train yourself. And yeah, I totally get why one would want to safeguard that system.
would you say that, technically, you touched upon this, that there is, because nobody wants the change or no motivation, there's no funding, even at the local level. And the only funding that we are seeing coming in the recent years through missions. Somebody wants something to be done in a short period of time, so you just train ki guidelines ye hai, and you just how to work, just like that paperwork or just delivering that, like ye cup yahan se, like how that much. But there is no sense of like, even if the training or the skill is just to remove the cup from here to there, how would that, like in the long term, whether that plays into the, like anything that people learn? Where I'm coming from is, we did an impact assessment on our own work. We've been doing this for almost a decade now. And we realized that like nobody connects it to secondary results or outcomes. It's always personal, whether even not the job. It's just that, okay, I grew, I learned something, and this thing. But it is, we ourselves cannot map it to an outcome. They themselves, the trainees themselves, cannot map it to an outcome. Yeah. So would you say that at least through missions, I am not for missions because I feel only 5 years and then it dies, but since we don't have any other way, do you think that some amount of like systemic change and just make it, is there a possibility that can stick? No, so I think if money is coming in through missions and through government programs, sure, usually those are very specific directed programs with, if there's good money for training, then I'm all for it. I think that should continue. All I'm saying, I think in addition to that, because then what about the rest of the kind of parity issue that I was pointing out, that this kind of money is going to certain people. You're not getting perhaps broad-based thinking about what it is that all of government requires. There are many, many, many departments that just don't have those kinds of budgets or those kinds of government programs that are coming in to support them. So what is a good foundational training that everybody should take? Right? Who's going to design that? The mission is not going to design that. That is going to come when these training institutions are empowered enough to say, every civil servant, every sort of government worker who comes in, this is the kind of basic behavioral competencies, functional competencies they should have based on which post they are in. So that's the side, that's the other piece that I'm kind of very hoping that starts coming in. And that's where Mission Karmayogi is going. It's trying to actually build the platform for all people to be able to access certain kinds of basic training. Thank you so much. So I have a few other questions, but we'll park it for now. We'll move on to Anand Lakhan. So he's going to, I invite him to speak about his experiences. And as we were discussing earlier, he's going to speak from the point of view of the beneficiary or the ultimate recipient of the government services. I will leave it to him, but he told me that he wants to present some cases to us where the service delivery and the capacity issues, all of it has somewhat come together, because till now everything that we have said has a bleak outlook to it. And to my surprise, Anand said that he would going to present some positive cases. So over to you. After you present, then we'll have a discussion. Positive from the community side, not from this. Sorry. I just want to know one thing from the people who are sitting here. How many of you are not familiar with Hindi, please? Everyone can understand Hindi easily? You can understand Hindi? Because I will be more comfortable in talking in Hindi just because the real flow will come in that only. वो feeling नहीं आती ना यहाँ वाली, तो वो तभी आ पाएगी जब, तो सॉरी हाँ, पर मुझे लग रहा है किसी ने हाथ नहीं उठाया, वो एक है ना यहाँ पर. हाँ. So my friend is sitting plus side to, she's going to translate. So if everyone is conversant in Hindi, and in case you need translations, then just feel free and I'll come in. But if everyone's understanding it, then I don't need to and we'll give you more time to actually take us through the case.
But I think people are not saying so. So, a little summary would be really great. Sure. Yeah. And there are a lot of people online, so we are not sure if everybody is fluent. Yeah. सबसे बकवास सेशन होता है लंच के बाद, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते हैं और हम लोग खाना ढंग से नहीं खा पाते क्योंकि हमको बोलना लगता है यहाँ आकर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं तीन स्टोरीज नहीं, मैं 3 स्टोरीज से स्टार्ट करूँगा आप लोगों के सामने। पहला स्टोरी है कि वी लॉन्च अ कैंपेन, दिस हाउसिंग राइट कैरावन कैंपेन। तो कैरावन चलाया था मध्य प्रदेश में 15 डेज का, और उस कैरावन को लेकर हम लोग हाउसिंग राइट्स को लेकर अलग अलग सिटीज में जा रहे थे। वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, वी आर ट्राइंग टू अवेयर पीपल ऑन मास्टर प्लान्स, अर्बन प्लानिंग, अर्बन गवर्नेंस, कुछ अलग अलग चीज़ों को इन ईजी एंड नहीं है। हेलो, अच्छा सॉरी हो गया, मुझे लगा मेरी आवाज़ अच्छी है। तो वी ट्राइड टू make aware people on these issues which were directly related to those people, उनका evictions को लेके, उनके demolitions को लेके। तो ऐसे ही कहीं से पैसा जुगाड़ हो गया था, अभी नाम नहीं लूँगा, FCRA चले जाता है, किस एजेंसी ने किया था, तो चले गए भैया लेकर, है ना। तो पूरा स्टेट में हम लोग घूम रहे थे, जबलपुर पहुँचे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड जबलपुर? नर्मदा का ओरिजिन है, हमारे यहाँ की लाइफलाइन है नर्मदा। तो वहाँ पहुँचे तो एक कम्युनिटी था संजय नगर, और वो हिल फुट पे था। हिल फुट आप जानते हैं ग्रीन बेल्ट में आता है, जो आप लोग तो भैया IHS में तो प्लानर्स बैठते हैं सब यहाँ पर, मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं। तो वो हिल फुट पर था, और वहाँ गए तो वहाँ लोगों के साथ जब मीटिंग करा, 30-40 महिलाएं थी, मोस्टली महिलाएं मिलती है, पुरुष कम्युनिटी डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो गाँव बस्तियों में महिलाएँ करती है। तो वो वहाँ मिल गई, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला जाओ बकवास मत करो, अब आप जैसे बहुत आते हैं चले जाते हैं, बस्ती बचेगी नहीं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली SDM केम टू अ कम्युनिटी एंड शी टोल्ड दैट यू आर लिविंग ऑन अ ग्रीन बेल्ट एंड यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हियर। तो हमने बोला यार आपको पता है ग्रीन बेल्ट क्या होता है? बोले हाँ, वो कहते हैं हरा हरा जहाँ पर सब ग्रीन होता है। तो थोड़ा बहुत IHS से सीखा हुआ मैंने भी बहुत कुछ, IHS में मास्टर्स लोग बैठे हुए हैं सब लोग, तो उनसे मैंने भी कुछ सीखा हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आप ग्रीन बेल्ट में हैं कि नहीं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 25 साल का या 30 साल का, उसमें मैंने देखा है कि कई जगह पर ग्रीन बेल्ट के नाम पे या किसी और लैंड यूज़ के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि दे आर अनअवेयर अबाउट डेट। तो लोगों से बात किया, एनीवन नीड ट्रांसलेशन और शुड आई कंटिन्यू? चलो कोई नहीं बोल रहा तो चलो, हाँ एक स्टोरी के बाद आप बोल दीजिएगा। तो वहाँ उन महिलाओं से हमने बोला, हमने लैपटॉप खोला, लैपटॉप खोल के हम लोगों ने उनसे बोला कि चलो देखते हैं आपका संजय नगर कहाँ है। संजय नगर देखा तो ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन था, नीचे वाला हिस्सा येलो था। सिर्फ 2 चीज़ की बात कर रहा हूँ, ग्रीन और येलो की, मैं बाकी सारे कलर्स पे नहीं जा रहा हूँ जो आपके प्लान में दिखते हैं बहुत सारे। मैं सिर्फ 2 कलर्स पे जा रहा हूँ, ग्रीन पे और येलो पे। मैंने कहा येलो का मतलब समझते? बोले नहीं समझते, हमें ग्रीन बताया गया है। वो भी जो ऑफिसर आती है उसने बोला है। उन्होंने बोला येलो का मतलब होता है रहने वाली जगह, जिस पे लोग रह सकते हैं। तो आपको पता है आप यहाँ पर हो? हाँ भैया हम तो यहाँ पर हैं। तो अगली बार वो आए तो आप सिर्फ उसको इतना बोलना कि बकवास नहीं करना, हम ग्रीन पे नहीं रहते, हम रहते हैं येलो पे, जो रहने की जगह है, आप हमको यहाँ से हटने का नहीं बोल सकते हो। और ये कन्वर्सेशन चला, चीज़ें देखी गई, 2 घंटे का। उसको ट्रेनिंग बोल लो, कैपेसिटी डेवलपमेंट बोल लो, जो चलते फिरते भी हो जाता है, और शायद ये बेटर होता है। जब अकाउंटेबिलिटी की बात बहुत चल रही थी यहाँ पर, है ना, मैं ग्रैब कर लेता हूँ। मैं बीच में अभी इनको बच्चों के साथ बैठा था, मैं कह रहा था कि मैं हमेशा गोबर काउडंग बनने की कोशिश करता हूँ, जहाँ गिरता है वहाँ से कुछ उठा लेता हूँ। तो यहाँ भी बैठे बैठे बहुत कुछ उठा रहा था। तो अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही थी। तो अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबल है अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। उन्हें पता है कि अगर मेरा मकान टूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा फैमिली सफ़र करेगा, पूरा बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। तो उस थ्रेट के मारे वो अकाउंटेबल जो हैं, वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से उन्होंने उसको बहुत केयरफुली लिया, उसको ग्रैब किया, उसको समझ लिया। 6 मंथ बाद मैं ट्रेनिंग देने गया था, यही आपका जो आप लोगों से सीखा है, अर्बन प्लानिंग और
मास्टर प्लान और ये सबको लेके 74th अमेंडमेंट और इसको लेके कम्युनिटी को थोड़ा सा उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में, फिर वही की वही मुझको पूरा की पूरा लॉट मिला। 80-90 लोगों में वो 20 महिलाएं भी थी। बड़ी खुशी खुशी हमारे पास आई, मैं कई बार रफ वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी। वो आई और मुझसे कहा कि भैया पता है वो अब की बार SDM आई थी, हमने चप्पल निकाली और हमने उनसे कहा कि अब बकवास मत करना, हमें पता है कि हम पीले पे रहते हैं और पीला रहने लायक होता है, आप हमको ग्रीन ग्रीन हरा हरा बोल के बेवकूफ़ बनाया करती थी। वो SDM शॉक थी, उसने कहा आपने कहाँ से सीखा ये सब? तो उन्होंने बोला नहीं हम सीख गए, हमें सब आता है कि आप ही हमें बताएंगे। और उन्होंने क्या करा था, एक फ्लैक्स निकाल लिया था। मैंने उनसे कहा था एक फ्लैक्स निकाल लो, उस फ्लैक्स पे आपका वाला जमीन को मार्क करके उस पर लिख दो संजय नगर, वो येलो कलर है, बाकी ऊपर ग्रीन, आपको जो करना है आप वो ग्रीन पे करो, आप येलो की तरफ देखना भी मत। ये एक छोटा सा इंसिडेंट। सेकंड स्टोरी सोनिया गांधी नगर। उनका एक ट्रेनिंग हुआ इंदौर के अंदर है, अभी ये राजीव गांधी, अभी आजकल अटल बिहारी भी बनने लग गए, दीनदयाल भी बनने लग गए, जिसका टाइम आता है वो सबके कॉलोनीज बनती है। तो सोनिया गांधी नगर था। सोनिया गांधी नगर में कुछ लोग यहाँ से गए हैं, IHS के काफ़ी लोगों ने सोनिया गांधी नगर देखा है। वो लोग एक ट्रेनिंग का पार्ट थे। उस ट्रेनिंग में उन लोगों ने सीखा कि कैसे मास्टर प्लान में एनोमलीज को आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान सा सीखा। कुछ कलर आइडेंटिफिकेशन सीखे लैंड यूज़ के कि क्या होता है, और जहाँ पर उनको थ्रेट ऑफ इविक्शन है वो वाले कलर्स पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। मैं भी जब कॉलेज पढ़ता था, और महू के आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, आप जानते हैं सर, आप छोड़िए, बाकी बाबा अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ। वहाँ से कॉलेज से जब मैं इंदौर अप डाउन करता था तो मैं देखता था कि जो बिल्डर्स के मुनीम होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो इतना मोटा फाइल लेकर करते, हमें समझ में नहीं आता था, धाड़ 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 धाड़, पता नहीं क्या ये कलरफुल मैप्स हैं। अभी जब लोगों के साथ में एक्सरसाइज करना शुरू करा तो हमें लगा क्या ज़रूरत है पूरे पे कॉन्सेंट्रेट करने का, 40-200 पेज 300 पेज का, हमें जितना हमारे लोगों से ज़रूरत है उतना हम लोगों से बात करते हैं। हम लोगों ने हालांकि जब इंटरवीन किया मास्टर प्लान में, ऑब्जेक्शन सजेशन फाइल किए, तो हम लोगों ने राइट टू द सिटी वाला बात किया और भी चीज़ों पे क्लेम किया, लेकिन जब कम्युनिटी की बारी आई वो बहुत सारा चीज़ एक साथ ग्रैब करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन लोगों के साथ हमने बात किया कि आप लैंड यूज़ पे बात करिए, आप जो गवर्नमेंट ने, जो एनोमलीज सरकार ने, स्टेट ने, टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने जो गलतियाँ करी है, जो लैंड यूज़ पे गलत चीज़ें बनाई, आप उस पर फोकस करो, आप टारगेट करो और उनको निपटाओ। सोनिया गांधी नगर 2018 का इलेक्शन, सोनिया गांधी नगर में 10 बाय 10 का हाथ से पेंट करा हुआ रिसर्च बेस्ड कम्युनिटी के लोगों के द्वारा रिसर्च किया हुआ, और उसका लिमिट सोच सकते हो कम्युनिटी के लोगों का रिसर्च कितना बढ़िया रहा होगा। कम्युनिटी के लोगों के रिसर्च से एक 10 बाय 10 का हाथ से पेंट किया हुआ बोर्ड, जिसपे पूरी कम्युनिटी का ज्योग्राफिया, पूरा हिस्ट्री, पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। साथ में नीचे लिखा हुआ है कि हमारी बस्ती, ये सब ट्रेनिंग में आया था, हमारी बस्ती कैपेसिटी बिल्डिंग में आया था। ये लिखा हुआ था कि हमारी बस्ती पिछले 50 साल से यहाँ पर है, पिछले 10 साल में आपने इसको ग्रीन बेल्ट में डाला है। उसके नीचे लिखा आपने ग्रीन बेल्ट में 5 साल पहले BSUP का बिल्डिंग बनाया है। BSUP आप में से कई लोग जानते होंगे, जिन्हें के फर्स्ट फेस में जो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर में वर्टिकल स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं G+4 के, वो आपने बनाया है। तो आप बताओ कि आप गलत हैं या हम? वो सवाल खड़ा उसने इलेक्शन के पहले कर दिया। जितने पॉलिटिकल लीडर्स आए वो जब आते थे कहते थे इस बोर्ड को हटाओ, बाद में बात करेंगे, तो लोग कहते थे ये बोर्ड यहीं रहेगा, पहले बात करो। कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस कैंपेन को मैं आपके सामने नहीं करूंगा, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था कैंपेन का, और घुटनों के बल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि लोग बार्गेन कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे वेरीफाइबल कम्युनिकेबल इंफॉर्मेशन के साथ में, ना कि हवा में झांकी कर रहे थे। ये लोगों का था। सोनिया गांधी नगर से ये चला है पूरे इंदौर में, बैनर्स, पोस्टर्स, सब लोगों ने अपनी अपनी चीजें लगाई। इंदौर से चला है मध्य प्रदेश के और 9 सिटीज में, 7 स्मार्ट सिटीज, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज। बहुत बातें हो रही है, कोई स्मार्ट नहीं हुआ आज तक। स्मार्ट पता नहीं आपके, हम लोग जो हिंदी जो उत्तर वाले लोग हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं तू बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसका होता तू बहुत चालू है। तो ये वो वाला सिटी चालू है। सॉरी अगर कोई है यहाँ तो माफ़ करना। अच्छा वो चले गए सब। तो मेरा ये था कि वो
वो पूरा की पूरा उन लोगों ने उस तरीके से तैयार किया, पूरे 7 स्मार्ट सिटीज में गया, बाकी सब में गया, हड़कंप मच गया, जबरदस्त हड़कंप मचा कि लोगों ने अचानक से ये क्या कैंपेन चला दिया। ये 2 स्टोरी भाई साहब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टोरीज है, और ये आई थी IHS के नो प्रोजेक्ट से, जिसको लेकर मैं शायद जब बहुत सारा मैंने ग्रैब किया, मैं गया पूरे देश में 10 शहरों में गया, 10 शहरों में जब मैंने ट्रेनिंग दिया, 2500 लोगों को कैपेसिटेट किया है इसी चीज़ों से, जो आज भी कॉल करके बोलते हैं। तो मैं इसमें पढ़ रहा था आपके कॉन्सेप्ट नोट में, 1700 IAS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया। मैं बोला वो तो उनका तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ सर, कहाँ हुआ उनका ट्रांसफॉर्मेशन? उनको तो जो करना है वो कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन लोगों का, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा सिटीजन्स की कैपेसिटी डेवलपमेंट पे, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग और रादर देन चिल्लाउइंग ऑन वो जहां की जिनके ट्रांसफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन तब बनेगा जब वो सिटीजन्स फॉर हुम एंड फॉर व्हाट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, किसके लिए कर रहे हैं? आप में से कोई सवाल कर दो, जवाब दे दो प्लीज मेरे को। ये कैपेसिटी डेवलपमेंट प्लीज दो ना जवाब, किसके लिए कर रहे हैं ये? किसके लिए? हर्ष, साईं, किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो अच्छे में रहते हो, IHS में ऐसी में बैठे हो। हाँ, लोगों के लिए, लोगों के ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही है। बैलेंस तब होगा जब हम सिटीजन्स के कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब वो बार्गेन करने की पोजीशन में आएंगे, इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल खड़ा करेंगे, वो लीगल फ्रेमवर्क में जाने की बात करेंगे, वो केस लगाने की बात करेंगे, वो ठोकने की बात करेंगे, वो नौकरी से हटाने की बात करेंगे। तो ये क्या इनके पिताजी भी अकाउंटेबल होंगे? नहीं करने की जरूरत अकाउंटेबल के लिए कोई स्पेशल डेफिनेशन। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, और ये करा है, ये ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करा है। थोड़ा सा एग्रेसिव हूं, माफ करना, लोगों के लिए बनना पड़ता है, और यहां तो सब अपने ही लोग बैठे, पर मैं उनकी बात कर रहा हूं, और सुबह से सुन रहा था ना बहुत सारी चीजें, तो मेरे को लग रहा था। दूसरा, IHS के इंटर्न्स, ये स्टोरी, IHS के इंटर्न्स का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा बेचारों का। 2, एक सेप्ट से और एक मुंबई से, आर्किटेक्ट लर्नर्ड लोग यहाँ से गए थे। 2 गए वहाँ पर, उनको एक लो कॉस्ट हाउसिंग, एडिक्वेट हाउसिंग को लेके कुछ 55 लोगों को पट्टा मिलना था, उसको लेके उनको एक डिज़ाइन करना था। वो मेरे साथ बैठे, उसमें और भी कंपोनेंट शामिल हुए, सब हुआ, वो बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि पंचायत में आए हैं, और पंचायत को सुन सुन के बड़ा मजा आता है लोगों को। यहाँ सब कुछ मिलेगा, डिवाइस मिलेगी जिससे हम लेवलिंग बहुत ईजीली कर लेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आनंद सर क्या वो डिवाइस मिलेगा? बोला इंजीनियर से पूछो। वो बोलता हमने नाम ही नहीं सुना। सर टेक्निकली एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, टेक्निकली कैपेसिटेट करने की बात कर रहे थे। डिवाइस उसी का पार्ट होता है, कोई सा भी डिवाइस। उनके पास कुछ भी नहीं था। एक गांव, क्योंकि हमने पिछले 10-15 सालों में शहर के अंदर ही इतना लगा दिया था कि हम गांवों को भूल गए थे, तो गांवों के अंदर तो कोई किसी तरीके से कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर में, जहाँ से आता हूँ, बहुत बढ़िया शहर है, एकदम साफ है। बट आई वांट टू शो यू फ्लिप साइड ऑफ डेट। 6 बार वो बाद में कभी मिलना, आप रात शाम को कभी डिनर पर आए तो, जिसका मन करे। तो वो लड़कियां जब गई तो उन लड़कियों ने, दोनों ने वहाँ बहुत सारी बातें करी। उनको सब चीज़ में बेचारों को डिससेटिस्फेक्शन मिला। उनको कुछ सामान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। किसी से बात कर रहे हैं, आपने लो कॉस्ट के बारे में, नहीं अभी तक कुछ करा नहीं है लो कॉस्ट के बारे में। वो गए, उन्होंने बोला कि जिस जगह पर आप पट्टा दे रहे हो, ये तीसरा स्टडी है, तीसरा एक स्टोरी है, आप जो पट्टा दे रहे हो वो लेवलिंग में नहीं है। तो कन्वर्जेंस की बातें चल रही थी। जब डिमोलिशन होता है, जब स्मार्ट सिटी होता है, तो स्मार्ट सिटी, PMAY, अमृत, XYZ सबका कन्वर्जेंस हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू ग्रैब द लैंड। वो प्राइम लैंड जो किसी टाइम पे कुछ नहीं था, तो यू हैव टू ग्रैब द लैंड। वहां पर आपका कैपेसिटेट हो जाते हो आप वो सारी लर्निंग्स जो आपके अंदर रहती है वो सारी उमड़ के बाहर आ जाती है। लेकिन जब आपको, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, पर सीरियसली, पर मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी बारे में तो होना ही चाहिए। तो ये पूरा खेल। अब वो जब वहां गए तो उन्होंने बोला नहीं हमको कोई मतलब नहीं, हमको ऊपर से ऑर्डर आया, हमको तो पट्टा, पट्टा ना, लीज होल्ड राइट फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम MP, मध्य प्रदेश, in 1884 फर्स्ट टाइम इट हैज बीन गिवन टू अर्बन रेसिडेंट्स फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ उस वक्त पार्ट था, उड़ीसा है, पंजाब है, ये अलग अलग स्टेट्स में। तो वो शौक थी। वो कह रहे कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तहसीलदार से, SDM से, तो कह रहा मुझे मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ देना है। तो कन्वर्जेंस
नेटवर्किंग, आपस में एक दूसरे के साथ में मिलके कैसे बेटर चीज़ों को करना। भोपाल में बहुत अच्छा नरोना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है, मेरे कुछ दोस्त हैं पास आउट हैं, मैं ही पास आउट मतलब पढ़ा नहीं तो बना नहीं IAS वाईएस, तो वो कुछ है तो वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वो कहते हैं 7 दिन के लिए मज़ा आएगा, दारू मिलेगी, खाना मिलेगा, 7 दिन के लिए नौकरी धंधे से दूर रहेंगे। ये है कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाले। आप बहुत मेहनत करते हैं सर, CPR मेहनत करता है, HS मेहनत करता है, सब जाते हैं, लेकिन आप सामने वाले की सोच देखो, ये है। उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए मैं फिर आ रहा हूँ, हमको वहाँ जाना होगा। हमने एक सिंगल अप्रोच पकड़ी थी इस पूरे उसमें। वो लड़कियां जब गई उनके साथ में ये सारा चीज़ें हुआ, वो शॉक थी सारी। उन्होंने कन्वर्जेंस के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उन्होंने पैसे की बात करी, फाइनेंशियल कंपोनेंट की बात भी हमने करी थी कि यार ये बोलेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा इतना, तो हमने कहा कि ये इतना पैसा SBM से, इतना पैसा जल जीवन मिशन से, इतना पैसा इससे, इतना पैसा इससे, पूरा तैयारी करके होमवर्क हम गए थे उनका। उसके बाद वो शॉक है, नहीं ये पैसा इसमें थोड़ी आ सकता है। अरे हम बोल रहे हैं सर आ सकता है, सब रूरल का है, आपके वहाँ ये सारा पैसा चल रहा है गाँव। वो ऑफिसर जो शायद ट्रेनिंग लेकर आया है, जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद बोला जाता है, वो वहाँ बैठा है, उसको नहीं पता है कि क्या होता है कन्वर्जेंस। उसको यही नहीं पता समावेश कैसे करते हैं अलग अलग योजनाओं का, और कैसे उसको बनाकर आप किसी एक अच्छी सी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में कोई बेहतर चीज लेकर आ सकते हैं, जिससे शायद आपको अवार्ड मिल जाए। लालच भी दिया मैंने, सर अवार्ड मिलेगा, UN में भेजूंगा लिख के, सर मेरी थोड़ी बहुत जुगाड़ है। तब भी उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तो ये था कि जिसमें आप वो बात कर रहे हैं, उनके पास में उनके पास है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, वो चाहते भी नहीं है करना। तो एक सिंगल अप्रोच के साथ जब हमने कम्युनिटी के साथ काम किया, जहां पर ट्रेनिंग नहीं, कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं, वहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था अर्बन प्लानर के रूप में, भले ही मिनी प्लानर है वो, अर्बन कम्युनिटी एडवोकेट के रूप में, कम्युनिटी अर्बन गवर्नेंस एक्सपर्ट गवर्नेंस के रूप में उसको किया था। वो छोटे छोटे में, आज वो नगर राज के नाम से 74th अमेंडमेंट गया साइड में, उसको नगर राज पता है, वो उस पर बार्गेन करता है। तो जो उसको किया उस पर आज भी वो उस चीजों को लेके वो बेहतर तरीके से बात कर पाता है। कुछ बोलना है क्या आपको? यस प्लीज, अगर थोड़ा सा कर ले, मुझे भी सांस। आप बोर लगे तो बोल देना, मैं तो बोलता हूँ, आदत है बोलने की, खाता इसी। I think what Anand has done is actually responded really well, maybe not as planned, but to some of Rahul's provocations. So there are 3 cases, and all 3 of them are from the end of the experience of the beneficiary, right? In case 1, what happens is in this colony called Sanjay Nagar in Madhya Pradesh, there are residents who are living on a foothill, and that foothill is told to them by the SDM, right? That it comes under the green belt, and there will be demolitions, and you cannot argue against this. This is a land use violation. When Anand and his team go there and they actually look up, the Sanjay Nagar per se was falling into what is the land use, which is the residential land use. What they do there is just a 2-hour conversation, which he said includes whatever you want to call training, capacity building, information asymmetry reduction, whatever, but basically ask them to map where their houses or where their basti was located on that yellow patch. Additionally, they did a bit of extra work and printed the flex, marked the colony there. And the next time the SDM came, they were armed with the necessary information to actually counter that. Now, I'm adding this based on more personal. It's not exactly the words that Anand used, but I think this point is very much connected to what Rahul spoke about as motivation or the lack of motivation. And here there is a motivation of life chances, and there's no bigger motivation than that. But I also think, again, this second case, both relate to when you build capacity on one side, how do you balance it with capacity building on the other side so that there can be a dialogue, and it's only the dialogue that changes it. So in Sonia Gandhi Nagar, something similar, but actually I would say a notch above, where there is a threat of eviction.
what they are able to do is actually pull together and do a mapping and historicizing of the Basti. It turned out that Basti was in that place for 50 years, and the last 10 years were the one in which the land use had changed in the master plan and gone into the green belt. What they also did was found a parallel, or actually an oxymoron case, where the government building was lying in the green belt and it was built after the green belt was announced. So here you are actually arming them with a particular bargaining point, to sit across. But I think there's a point he made about when you think of capacity, and I think I would personally connect this to the other point in Rahul's presentation, which is about the larger goal. What is the larger goal? And therefore the curriculum content of that capacity building is actually in lieu with that. And here is what they did. So what they did as an intermediary organization was a lot of work on editing it and contextualizing it. They didn't make them go through the things they didn't need to, but went from the idea of how do you sit across the table and bargain for this? The third side is very interesting, because here is the flip of it, where perhaps citizens, I'm using the word quite loosely here, but citizens here, it was the IHS interns, Anand and his team, who went to the Tehsildar, and here you see that actually the capacity on this side of the table is a lot more, and the capacity on that side is so low. So before we get into what happened there, let me just go through the case. They were supposed to give out pattas. Pattas are leasehold lands. And what Anand, his team, and the IHS folks were trying to do was actually integrate all the urban schemes for them to actually access adequate housing, and not just the bare minimum that would come under one scheme, but draw convergence across many schemes and take that entitlement all the way to adequate housing. But the Tehsildar was not armed with that kind of information. And no amount of prep work on this side of the table was able to convince the other side that this can actually happen. So here is where, to me, this is a very interesting case of it's not just that the capacities have to be built on the citizen side, they actually have to match for something to move, for the needle to move. So, I mean, I think that's a good summarization. Yeah. While looking towards the main theme of today's webinar, जब मैं कॉन्सेप्ट नोट में पढ़ रहा था पूरा, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ अप्रोचेस तय होना चाहिए कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए. ये 3 तरह का अप्रोचेस मुझे लगा है, और भी शायद हो सकती है. जो मुझे समझ में आया मैंने वो बताया कि पहला अप्रोच तो यह है कि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मॉडल नहीं बोलूँगा, मॉडल रेप्लिकेट होता है विदाउट नोइंग द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ अदर्स प्लेसेस, क्योंकि मॉडल सबसे खतरनाक शब्द होता है. तो बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेंगे तो बेटर होगा. तो बेस्ट प्रैक्टिस या हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, उनको लेकर लोगों के साथ मिलकर हमें कुछ मॉड्यूल तैयार करना चाहिए कम्युनिटी के साथ में, खासकर जो कम्युनिटी है, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, या जिसको हम वल्नरेबल कम्युनिटी बोल रहे हैं. आफ्टर ऑल ये सारा जिनको हम कैपेसिटेट करने की बात करें, ये सर्विस प्रोवाइड उन्हीं को करेंगे. बेसिकली हमारा आखिर में जाके एंड रिजल्ट्स तो वहीं पर निकलना है. इसलिए हमें लग रहा है कि जब हम एक पहली अप्रोच यह है, साथ में कई सालों से सिविल सोसाइटी काम कर रही है. बीच में मेरा मन कर रहा था एक केस लगाऊं कि पिछले 20 साल में सिविल सोसाइटी को फॉरेन डोनर से कितना पैसा मिला और इंडियन डोनर से कितना पैसा मिला और इसका रिजल्ट्स क्या रहा है. बहुत मारते हैं मेरे को सारे लोग, क्योंकि कई बार पैसा भी वहीं से मिलता है मुझको, तो NGO से CSO से. तो आप देखेंगे कि उनको भी कैपेसिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उनका सोच में भी बहुत बदलाव आया है. तो एक जब हम कम्युनिटी के साथ बात करें, सिविल सोसाइटी को इसमें नहीं हमको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए. क्योंकि लोगों का ट्रस्ट रहता है उन पे, लोगों के साथ बरसों से काम करते हैं, तो शायद उनको भी हमको इसमें कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए. हम गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट एजेंसीज की तो बात कर रहे हैं. दूसरा मुझे लग रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को कैटेगराइज करके, सब कैटेगराइज करके ही होता है. सुबह से बता रहे हैं कि एक निचले स्तर के कर्मचारी से लेके बड़े स्तर के कर्मचारी को लेके IAS तक के आप लोग ट्रेनिंग देने जाते ही हैं, ये सब होता है. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक तो इन हाउस ट्रेनिंग तो हम देते ही देते हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा
ट्रेनिंग मॉड्यूल में चेंजेस लाकर इनको ग्राउंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स कुछ देना चाहिए, कहीं कुछ ग्राउंड रियलिटीज से इनको रूबरू फेस कराना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझे। एक ये हो सकता है ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, लोगों की नीड्स, लोगों के एस्पिरेशंस को समझ पाए कि लोगों की क्या नीड है। क्योंकि ये होता है, मैंने कई जगह पर देखा है कि प्लानर्स जो आते हैं आजकल तो गूगल अर्थ पे बैठ के तो पूरा प्लान निकाल देते हैं वो लोग, और पता नहीं इमेज में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है ऊपर से, थोड़ा बहुत सीखा हूँ तो वो मैंने देखा है, वो तो उसमें हो जाता है वो। तो हमें लग रहा है कि ग्राउंड पर आने के बाद शायद कुछ समझ में आए, कितना सुधरेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तीसरा मुझे लग रहा है कि एक इंटीग्रेटेड, जिसमें इन सबको मिलाकर, एक साथ में मिलाकर भी हमको कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मजबूरियों को भी समझे लोग, कितना प्रेशर है, क्या है, क्योंकि लोग बस्तियों में सीधे गाली बकना स्टार्ट करते हैं, सीधे बोलना स्टार्ट करते हैं कि हमारी बात सुनते नहीं है। तो एक दूसरे को समझें, क्योंकि इसके एक बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसका बहुत बड़ा असर आएगा अगर हम लोगों के साथ में ये करते हैं। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने वहाँ करी थी कि एक बार अगर ये बैलेंस हो गया, सिटीजन्स कैपेसिटेट हो गए और बार्गेन करने की, अच्छे बार्गेन करने की पोजीशन में आ गए, तो वो अपने आप अकाउंटेबल होगा। उसको नौकरी बचाना है, घर बाहर चलाना है, बड़ी मुश्किल से IAS IPS या जो भी बना है वो बना है। दूसरा ये है कि आप सबके अप्रेजल होते हैं ना नवंबर दिसंबर में, पता नहीं कब होते हैं, सिविल सोसाइटी में होते हैं अप्रेजल्स, आपके वहाँ नहीं होते होंगे IHS में, कई जगह पर इसी हफ्ते में बोल दिया है अप्रेजल्स होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है जब ट्रेनिंग की बात की जाती है, कहीं नॉर्म्स में ये रखा जाए, कंपल्शन रखा जाए, किसी नॉर्म्स में ये रखा जाए कि ऑफिसर्स का भी अप्रेजल होगा, कर्मचारियों का भी अप्रेजल होगा, कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोजेक्ट्स जो आए हैं उसके ऊपर कितना काम हुआ है और कितना जो जिम्मेदारी जो उनको दिया गया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया था, उसके प्रति कितने अकाउंटेबल रहे, कितना चीज़ों को करें। तो शायद अप्रेजल तो होना चाहिए, मेरे को लग रहा है जब हमारा होता है तो उनका तो अप्रेजल होना चाहिए। तो एक अप्रेजल जैसी बात हम लोग इसके अंदर बीच में बहुत इजीली कर सकते हैं। और देखिए सब जगह पर एग्जिस्ट करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का हर प्रोजेक्ट्स में, हर प्लान्स में आता है, कंपोनेंट है कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है लोगों की, चाहे वो अवेयर करके करना है, कैसे भी करना है, किस फॉर्म में करना है। आप 74th अमेंडमेंट उठा लो, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर तो बहुत क्लियर दिया हुआ है कि आई डोंट नो मोहल्ला सभा, मोहल्ला समिति आप लोग कितने लोग समझते हैं, लेकिन अगर वो बनाई जाती है तो जो लोग उस समिति के मेंबर होते हैं उनको कैपेसिटेट किया जाएगा, इवन बजट फॉर्मेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए उनको फ्री में सब करा जाएगा। कितना होता है, तो वो एक चीज़ है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इवन आपका स्मार्ट सिटीज़ में सुबह बहुत अच्छी बातें चल रही थी स्मार्ट सिटीज़ को लेके, है ना। स्मार्ट सिटीज़ में क्लियर लिखा हुआ है कंसल्टेशन देन टेक कंसेंट। वो कंसल्टेशन को कंसेंट समझ लेते हैं, वो बुला के और फेसबुक में डाल के, सोशल मीडिया पे डाल के कहते हैं कि कंसेंट है साहब। 20,000 फॉलोवर्स हैं, 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं स्मार्ट सिटी में। एरिया डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसमें इतने, पेन सिटी वाले में हमने इतना डाला था, उसमें इतने आ गए हमारे फॉलोवर्स, सर ये हो गया सब। वो बेसिकली वो एक कंपोनेंट उसमें दिया है कि आप लोगों को कैपेसिटेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे, यार ये एक स्मार्ट सिटी है, अमृत में ये होने जा रहा है, PMAY के अंदर ये होगा, उसका DPR ऐसा है, उसका लोगों को आपको समझाना है, कंसेंट लेना है। लेकिन ये बड़ा ही गड़बड़ है कि कंसल्टेशंस करते हैं, कंसेंट नहीं लेते हैं, और उसी को जो सिग्नेचर को वो कंसेंट, ये शब्द मैंने इजाद कर लिए ये इन लोगों से सीख के। दूसरा ये है कि हमारे सारे चीज़ में, सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए इन सब के अंदर ये अश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योर नहीं करते हैं। तो कैसे नॉर्म्स तय करे जाएं, खासकर जो लोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, IAS को, इनको सबको ट्रेनिंग देते हैं, IHS वाले भी या कोई और भी लोग, किस तरीके से उनको उस तरीके से तैयार किया जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा लिमिटेशंस, थोड़ा सा कंपल्शन डाला जाए। प्योर अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैं फिर अगेन ये वाली बात करना चाहूँगा कि उनको अकाउंटेबल होना जरूरी है। आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग पर, उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसके बजाय आप उसका आधा पैसा लोगों पर खर्च कर दो जो कम्युनिटी के हैं, वो उनको अकाउंटेबिलिटी याद दिला देंगे। क्योंकि लोग जब लीगल भाषा में बात करना शुरू करेंगे तो चीज़ें बैलेंस होगी। लास्ट में एक और सिंगल स्टोरी के साथ खत्म करता हूँ, IHS के साथ जुड़ी हुई है। वो इसलिए है कि आप सिर्फ इसको ये मत समझिए कि ये सिर्फ घर से जुड़ा हुआ मामला है या लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ मामला है। जब आप किसी को कैपेसिटेट करते हो, और खासकर आप जेंडर पर्सपेक्टिव से देखकर जब आप कैपेसिटेट करते हो, मैं फिर सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ नॉर्मल, जब आप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने बेहतर आते हैं
कुछ लोग यहाँ से मिले, साई मिले, और भी लोग मिले। रंजीता सिंघार करके एक लेडी, वो IHS और युवा और हमारी दीनबंधु का एक कोलैबोरेशन में एक स्टडी हुआ था इंदौर में, प्लान को लेके, अर्बन प्लानिंग को लेके। उस स्टडी के अंदर एक 22 पेज का, वो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, वो 22 पेज का फॉर्म का उसको ट्रेनिंग दिया गया था। हम सब लोगों ने, गीतिका भी थी, बहुत सारे लोग थे, ट्रेनिंग दिया गया। वो उस ट्रेनिंग 22 पेज का फॉर्म वो भरकर आती थी, वो सीख गई। 22 पेजेस का फॉर्म, जिसको कभी लिखना पढ़ना नहीं आता था, वेल में रहती थी इतना इतना, वो 22 पेजेस का, और उसने अर्न किया क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा था। 15-16,000 अर्न किया। जब बुकलेट हुई तो मेरी एक शर्त थी कि जितने भी सर्वेयर्स हैं इन सबके नाम इसमें आएंगे। तो रंजीता सिंघार का नाम भी उसमें आया। उसका हस्बैंड मजदूर था, लेकिन वो बहुत ही, जैसा मेल डोमिनेटिंग होता है उस तरीके का उसका था। वो घर में गई, खुशी खुशी कहा कि मेरा नाम किताब में छपा है। तो उसके हस्बैंड को फिर थोड़ा सा ताना लगा, बोला अंग्रेजी में छपा है, किसको समझ में आएगा। तो रंजीता में चेंज देखो आप, कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का चेंज देखो। उसने बोला तुम्हारे घर में कोई हिंदी की किताब में नाम नहीं छपवा पाया, मैं अंग्रेजी की किताब में नाम छपवा कर आई। ये उसके शब्द थे, उसके वर्ड्स थे। तो जब आप किसी को कैपेसिटेट करते हो, ये मेरा निकल कर आया, मुझे नहीं मालूम कि आज से कितना रिलेवेंट था, पर यह रिलेवेंसी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग हम किसी सिर्फ टेक्निकल और उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सोशल स्टेटस में जेंडर पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत जरूरत है। तो वो जब निकल कर आया तो प्राउड फील होता है कि यार एक महिला जो इतना था, लेकिन आज उसकी वॉइस रेज करने लग गई है क्योंकि वो निकली है। उसका कैपेसिटेट किया था उसको अर्बन प्लानिंग पे, उसको मास्टर प्लान पे, उसको कैसे सर्वे फॉर्म भरना है, लेकिन आज वो इस तरह का चीज के साथ में आ रही है। तो जो 2 अप्रोचेज मैंने बताई है, सॉरी शायद आप, मैं जबरदस्ती भी लोगों को झिलवाता हूँ जानबूझ करके, चिल्ला के बोल के, वो मजबूरी पड़ती है लोगों को सुनना। तो सॉरी, आप लोगों का टाइम बहुत सारा ले लिया मैंने, शायद राहुल भाई से ज़्यादा टाइम ले लिया। पर वो 2 अप्रोच के ऊपर अगर हम, वो 3 अप्रोच पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स गेन कर पाएंगे। थैंक यू। You want to? Thank you so much, Anand. I'll just एक तो ये जो एस्पेक्ट है कि हम सुबह से सिस्टम ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज बात कर रहे थे, और ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस पूरे सिस्टम का की जो कम्युनिटी beneficiary, and more than beneficiary, I really don't like that word, more than more participated. It's not a good word, it's the current language, but I think the citizen as a participant, yes, an equal owner of development and whatever we are services that we are trying to provide to each other. I think that approach that you brought, that aspect in, was really very necessary to this today's discussion. And also going back to what Rahul was speaking on, the lack of motivation and the systemic problems of HR within the system. And what I heard from you is this important leverage that if we have educated citizens who are demanding or having different kind of expectations, that might be the leverage. Because we've all morning, and even when we started, we were like, how to motivate, how to push this resistance, it seems. But then again, I'll also borrow from the second panel of the day, where the lady from the Tata Group also said that they approach capacity building both top down and bottom up. Their change management principle is sabko saath leke. They don't start from the top and then slowly filter down. And that struck me, that I think in this case, in what we are looking at, that it has to be a simultaneous approach. We need educated citizens, but we also need Mission Karma Yogi or some form of it, because Karma Yogi also looks at bringing in citizen feedback, which is systematizing. I mean, there might be a lot of laws in the system. Maybe next year we are going to sit and criticize that framework itself, that this doesn't make sense. But having said that there is that aspect that they are also looking at. So we will maybe look forward to the next year and the years to come to see how this simultaneous capacity building from all ends can be done, and perhaps that's the kind of institutionalizing that we are looking at. So I'll conclude my panel here. We have run over time, but still I'll take 5 minutes if there are any questions. Are there any questions online?
Okay. सब थक गए खाना सब खाने थक गए अच्छा so on that note thank you Anand, thank you Rahul, thank you Kinjal, and we end the panel here and over to okay we have a I request Anuttama to please give a mementos token of for you. appreciation. Yes. Anuttama. Thank you.